ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि जो लाइफ है ना, लाइफ, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यू डील विद लाइफ। आज हम आपको बताएंगे कि ये लाइफ जो है ना, इसके सीक्रेट्स क्या है। ठीक है। अ, इसके बारे में बड़ी अच्छी ये एक वेब लिंक है, मैं आपको भेजूंगा। इसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, लाइफ का सीक्रेट क्या है, लाइफ लाइफ क्यों है, ये सारी कहानी आज इंशाल्लाह। और लाइफ को हमारा ये जो डिफरेंट तरह के हर एक बंदे के अंदर डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी है। ठीक है। आप कौन हो और आपके अंदर ये डाइवर्सिटी है, ये कैसे है। ठीक है। आप सारे एक दूसरे से डिफरेंट हो, ऐसे ही शक्लें आपकी डिफरेंट है, मिजाज डिफरेंट है आपकी, जो है। अच्छा, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। हर वो चीज जो सांस लेती है, ग्रो करती है और अगली जनरेशन पैदा करती है और महसूस करती है, ये सारी सारी क्या है, लाइफ है। ठीक है। अब ये लाइफ है तो लाइफ ऐसे ही लाइफ क्यों है, ये क्वेश्चन है। कैसे महसूस करती है, क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारी ये फिनोटाइप आती है। ये सारी कहानी आज इसकी ना, साइंस बिहाइंड दैट आई विल डिस्कस। ओके। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर ठंड आती है तो हम क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, कोई कोट शोट पहन लेते हैं। बाहर गर्मी होती है, लाइट कपड़े, एसी ऑन कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बाहर, ये बाहर को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। और अच्छा, अगर एनवायरमेंट के अंदर चेंज आए, इसे कहते हैं स्टिमुलस। वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रहा है, ये जस्ट छोटी सी इन्वायरमेंट के अंदर सर्दी से गर्मी हो जाए, गर्मी की सर्दी, या बाहर मौसम, बाहर आपको बाहर इधर पैथोजन हो, जिस तरह अभी रात कुतड़ी बड़ी थी, यू नो, कुतड़ी, तो जो इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, वो जो बेड बग्स आते हैं, वो बाजार गया तो इतने वो थे मच्छर। इट मीन देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस। उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस। आप स्टिमुलस को महसूस कैसे करते हैं, आपके अंदर सेंसस है। ठीक है, ये तो हो गया ना वो चीजें जो हमें, पांच सेंसस है। हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल क्या होता है, सेल, सेल। ओके, दिस इज सेल, व्हाई दिस सेल, ये हर तरफ से बंद है, ये हर तरफ से, अगर इसे टेप लगा दिया है तो नो वन कैन जस्ट, कोई कोई एंटर नहीं हो सकता। दिस इज सेल। आप थोड़े से पोर्ट हो, कुछ गैसेस आए जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोई बड़ा दरवाजा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन है, लेकिन बंद नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज सेल। आप फुटबॉल देख रहे हो, फुटबॉल फुटबॉल है क्या? बॉल, कोई छोटी छोटी बॉल, तो वो फुटबॉल जो है ना, वो सेल है। फुटबॉल क्या है, एक होता है सर्कल, एक होती है इसकी 3D शेप, स्फीयर जिसको कहते हैं। तो सेल जो है वो 3D है, जस्ट लाइक दैट। सेल ये है, ये अकेला सर्कल नहीं है। सेल क्या है, स्फीयर है। सेल क्या है, यहां से कोई चीज आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, हर जगह से ये महसूस करेगा। ठीक है, सेल क्या है, स्फीयर। हमारी बॉडी के सेल्स क्या है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है। उसको हम, ये कंफ्यूजन आपने दूर करनी है कि दिस इज सेल। अगर ये कमरा, ये दरवाजे, सारा कुछ बंद हो जाए तो ये भी एक कोठड़ी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ये सेल है।
सेल क्लोज, बिल्कुल क्लोज सरफेस को कहते हैं सेल। जिस तरह जेल के अंदर एक सेल होता है, जिसके अंदर किसी बंदे को रखा हुआ है, तो वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल, कोठरी। क्या कहते हैं उसको? कोठरी। अच्छा, हमारे इस सेल को, इसमें हमारी बॉडी को महसूस होने का मतलब है कि इस सेल को कोई महसूस हो रहा है। यार हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की। ऐसे ही है ना बच्चे, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की। अब जो भी स्टिमुलस आती है एनवायरमेंट के अंदर, क्लाइमेट चेंज आ गई है, वेदर पैटर्न चेंज हो गए हैं, पूरी दुनिया के अंदर फॉसल, बाहर धुआं वाली गाड़ियां हैं और आपको धुआं महसूस हो रहा है, तो सबसे पहला जो चीज महसूस करता है प्लांट का या एनिमल का जो सेल है, वो क्या है? सेल। कम हियर प्लीज। ओके, व्हाट इज सेल? सेल इज द 3D शेप ऑफ द, हाँ, जो एनिमल सेल होता है वो सर्कुलर नॉर्मली होता है, और प्लांट सेल जो होता है वो नॉर्मली इस तरह का होता है ना, ऐसे ही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, दैट एनिमल सेल आर नॉर्मली round in shape and plant cell is like rectangular or square or something like that. Okay, there is a change in the environment. What will happen? What change in the environment is known as stimulus. Change in the environment is known as stimulus. There is a change, little change in the environment, that is known as stimulus. Okay, so how our cell will respond? Okay, इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. Why there are eyes here, not here? How many genes in our body? 30,000 genes. 30, 46 chromosomes. 30,000 genes and 46 chromosomes. What is mitosis? When the cell divide and two cells, and all these cells also have 46 chromosomes. And similarly, after the zygote, whole body cells, whenever they will divide, it contains 46 chromosomes. Everyone knows. Even from our head to feet, all the cells are having 46 chromosomes. Okay, everything is clear now. If genes and 46 chromosomes are present in each and every cell, why there are eyes here, not here? Gene expression. What is the gene expression? Functioning of the gene. Exactly. What is the functioning of the gene mean? कहाँ से start होता है? When we say that my function is to teach your class. My function starts when I enter into this department premises and enter into, and then I start teaching. After 1.5 hours, my function stops because my teaching is completed. Similarly, there is a function of the gene. There is an assigned function of the gene. Whenever they need, gene is present there. Even all your teachers are present in this department, but not all teachers teach in each cell, each classroom, because there is a specific duties assigned to each teacher for a specific class. Okay. Similarly, our genes, they are present in all our bodies, but they are not performing everywhere each duties. There are eyes-related genes that will express only in eyes. There are skin-specific genes that will only express in
There are some genes. There are some genes that are environmental specific. What does it mean? When there is a cold, only those genes will express. When there is a cold outside, only those genes will express. When there is a pathogen outside, immunity related genes will express. When there is a heat outside, that the only those genes will express that will help to mitigate this heat stress. Okay, and as I told you earlier that what is a stimulus? Change in the environment. सबसे पहले कि what is a stimulus? Stimulus is the change in the environment. How plant detect that stimulus? Yes, ऐसा ही है. मैं बोल ना सकूं, नहीं सर, सुन ना सकूं. Sorry, if I can't hear, what will happen? If you keep on shouting गालियां 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 and I can't hear that, will I respond? No, because I am not listening to your voice. Similarly, if there is a cold outside and our sensors are not working, then we cannot respond and we will die. If there is a lot of cold and if we are not, our body's mechanism is not activated against that cold stress, definitely we will die. It means that there should be a strong sensing system in our body. There is who can detect the, like this mobile is here, there's the outside UFO signal. If they cannot able to detect the signal, we cannot play any movie on that. We cannot see any messages on that. Okay, antenna system is good, but they are not catching the signal. It means that this is not a good mobile. This mobile is redundant. This mobile is redundant का मतलब function lose कर गया अपना हम. Okay. So similarly, is there any system in our body that actually help us to understand? Is there any system that help us to catch the signals? Yes, there is a system. मैंने already बताया था कि there are three things in our body if you are intelligent. Observation, processing, and output. Similarly, our cells are intelligent against cold stress if they can observe there is a cold outside, and then they process, then they express some genes, and these genes then help the cell to survive under cold stress. Like if there is a cold outside, there is a protein on the cell membrane, in the plasma membrane, that actually detect this and send calcium ion from outside of the cell to the inside of the cell. This is the signaling. This is the ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो एनिमल या प्लांट सेल जो है वो क्या करता है, if there is a cold environment outside the cell, they actually the neighboring cells, you know, this is intercellular spaces, from here the calcium ion they came from the outside the cell inside the cell. This is the first indication to the cell that there is a cold outside. There is a cold. There is a one protein who actually catch this signal, calcium ion, and then there's a membrane. There's this antenna or signal is outside the cell, and they capture this signal and then take them inside the बाहर signal आया. What is they are in the form of calcium ion.
कोल्ड है, कोल्ड ने कैल्शियम आयन को एक्टिवेट किया और कैल्शियम आयन ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट देयर इज अ cold outside, there is a cold environment outside the cell. Okay, then what will happen? What is the next step? Processing. They receive the signal, they observe that there is a, now there is time of processing. Okay, अब आप question है, there is a question, what happened if you have two things in your house? One is oil, one is ghee. What is oil and what is ghee? Saturated fatty acids are called saturated. No, ghee. Ghee, you know, vegetable ghee, that is known as saturated fatty acid. And oil is, okay. What happened to oil if you keep it in the fridge? Remain same. No, वो freeze नहीं होगा ना? It will not freeze. But what happened if you keep desi ghee or ghee inside? Freeze हो जाएगा. अब आप समझे, अब आप ये बताएं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑयल तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस, व्हाट विल हैपन? What will happen if our body cell they produce oil type compound during cold stress? What will happen? Again, I need your bottle, please. Sorry. This is a cell. This is a football. This is a cell. There is oil, and oil accumulates around the cell. This is the cell, and there is oil accumulate around the cell. What will happen? Cold will not enter into the cell. This is like an insulator. This is exactly. This is like a insulator of the cell. It means this cell will not be affected by the cold. Okay, this will not be affected. So your cell will not by. So same thing happen when there is a calcium in from inside the cell. There is a protein that gets signal. This protein it's activated upon calcium. When calcium came inside the cell, this protein is present in the cell. This protein is present in the cell, but inactivated. They are present like with chia. Where is chia? Who is chia? Okay, if CR is there and he is inactive right now, I will ask him that please go to the admin and do something. Then they are activated. If they got some signal from me, they got some signal from me and they are activated. Okay. Similarly, this protein, when they get signal from the outside, they become activated. Next, this is a long questions. There are a lot of questions, but I'm just summarize that. Then we will keep it. Will tell you in detail about that. Okay. Protein activate हो जाती है. This protein they become activated. Then this protein is known as transcription factor. नोट कर लें इसको. इस प्रोटीन को क्या कहेंगे? अच्छा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. अगर बाहर कोल्ड है तो इसको कहेंगे कोल्ड बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. इसको कहेंगे CBF. क्या कहेंगे? कोल्ड रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है. अगर बाहर हीट है तो उसे कहेंगे हीट शॉक फैक्टर. क्या कहेंगे? दिस वो बाहर से प्रोटीन अगर एक्टिवेट होती है तो तब हम कहेंगे HSF. अगर बाहर
पैथोजन है तो पैथोजन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, समथिंग लाइक दैट। हमारी बॉडी के अंदर एक तो चीज होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, आपको पता है। अच्छा, ये ग्लैंड्स क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जो मेडिकल के स्टूडेंट है हमारे पास, सो व्हाट दे प्रोड्यूस, हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। क्या वो प्रोटीन्स होती हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ द हार्मोन? दे आर जस्ट a metabolite or chemical. They are just a, this is not protein, they are actually metabolites or chemicals. काम क्या होता है उनका? Stimulate करना. This is very good question. They actually stimulate, फर्ज किया जो सिग्नल को रिसीव करके ना वो स्टिमुलेट कर देते हैं इसको, इस प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देते हैं। जहां जहां अच्छा बन गया, एक हमारी ना प्लांट से रिलेटेड, मेरी आई एम पीएचडी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू अबाउट मोर अबाउट प्लांट रिलेटेड। ओके, सो प्लांट्स के अंदर आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा, ऑक्सिन। यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? व्हाट इज ऑक्सिन? इट्स अ प्लांट हार्मोन, इट्स अ प्लांट हार्मोन। दे this plant hormone actually they produce at the tip of the, and they travel from cell to cell to the other part of the, if this cell they receive oxygen, they sense the oxygen, it means they उसके अंदर एक सेंसर था, इसमें हार्मोन आया उसके सेल के अंदर, उसने उसको रिसीव किया। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ये भी इसी तरह से एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, लेस लाइक दैट, वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। उस प्रोटीन का नाम है ARF। क्या है? ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर। जिसके एंड के ऊपर F लिखा हो ना, दे आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे आर नोन एज फैक्टर। बाहर कोल्ड है तो CBF एक्टिवेट होगी, बाहर हीट है, ठीक है, बाहर से कोई ऑक्सीजन आया है, अगर इथाइलिन आ गई है, इथाइलिन भी एक प्लांट हार्मोन है, तो वो एक, उसको कहते हैं ERF, वो किसको एक्टिवेट करती है? ये सारे ERF, ARF, HSF, CPF, they all are proteins, but there is a different protein for different stress. There is a different protein, different stress. Similarly, in human, there are different proteins that are activated upon different hormones, upon different stresses. Okay? यहां पर समझ आ गई? All mechanisms are भी सारे के सारे मैकेनिज्म, हर मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, फॉर ऑल मैकेनिज्म के लिए सेम तरह का मैकेनिज्म है। पर क्या कोई भी स्ट्रेस आता है, all these stresses are controlled by the same mechanism, but there is a difference in protein. उनकी हर एक there is a, जिस तरह ये इसके लिए ही है, ये इसको तो नहीं कवर करेगा, या इसको किसी और को कवर नहीं करेगा। There is specific for every marker or every pencil or every pen. Okay, similarly, same thing in our body. When there is a specific environment, there is a specific transcription factor or activated. Okay. अब क्या होता है when it is activated? What happened to these proteins when they are activated? Exactly, they will process whatever the stress they receive, and then they travel towards the nucleus. Then they travel, brain of the cell is known as nucleus. There is a DNA in the cell that is known as chromosomes, genes, 30,000 genes are present inside the nucleus. So these protein then goes to the nucleus, and then they activate their corresponding genes. Cold
Binding factor, they activate the expression of cold related genes. Heat shock protein activates the expression of heat shock protein. Oxygen response factors, they activate the expression of the genes that help the plant to grow. To plant to oxygen क्या करती है? Plant की growth and development करती है. They active oxygen play a significant role in the development of plant growth and development. बच्चों समझ आई? पीछे अभी तक कहा क्या पढ़ा? अभी तक लास्ट लास्ट वो ऑरेंज ऑरेंज है कलर आपका नहीं पढ़ेगा. ये समझिए वो ऊंचा मत कॉन्फिडेंट करता. हाँ वो एक्टिवेट हो जाती है. कहाँ कैसे होती है एक्टिवेट? बाहर से स्टिमुलस आया. व्हाट इज द स्टिमुलस? चेंज इन द एनवायरनमेंट. दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट is detected by the cell and they activate their transcription factor. They activate. This is the only thing I just studied. कि हमने क्या किया कि बाहर से एक सिग्नल आया, उस सिग्नल को जब रिसीव करते हैं और वो रिसीव होने के बाद उनके स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. समझ आ गई? अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते क्या है? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन प्लीज? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन मीन सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स फ्रॉम डीएनए. डीएनए से आपने ये पढ़ा होगा कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन, and DNA to RNA is known as transcription. RNA to protein translation. You must remember that thing. DNA से RNA बनता है, that is known as, and from RNA से protein बनना, that is known as. You must remember that. Okay, if there is the synthesis of RNA of any gene, even this gene is expressing this gene is, otherwise this gene is not expressed. But otherwise this gene is not. Who activates this expression? Transcription factor. Transcription. Okay. फर्ज किया ये एक जीन है, ठीक है, इसके ऊपर लगे हुए थे कीले. तो कीले देखे स्क्रूज, कोई ना कोई इधर ना कोई चीज पड़ी थी, एंड आई कैन नॉट सिट देयर बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ messes there. My function is to make RNA from DNA. I am RNA polymerase. If I am RNA polymerase, I have to sit here on a specific gene, then start making RNA. If there is something like नहीं पता कील जो होती है वो इधर पड़ी हुई है, मैं बैठ सकता हूँ? Can anyone sit there? If there is a lot of steel or some rods or anything like यहाँ पर वो plants ही पड़े हो या कोई भी चीज पड़ी हो, we cannot sit there. First of all, this transcription factor will come. They remove that. Okay, transcription factor means anything that help in the transcription. Any protein that help in the transcription, that is known as transcription factors. को हम क्या कहेंगे? वो factors that help the gene to transcribe from DNA to RNA, that is known as. ये transcription factor इसलिए इसको कहा जाता है कि ये हार्मोन से स्टिमुलस से एक्टिवेट होती हैं, then they travel towards nucleus, और न्यूक्लियस में जाके they activate some genes. Okay,
एक्चुअली जीन्स के ऊपर लगे होते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या होता है वो मीटे क्या है, CH3, this what's here ATA, there is a CH3 over there. Just because of this CH3, DNA is unable to make their RNA. DNA, that gene is unable to make their. Who remove these methyl group from the transcription factor? When these are removed from the, then RNA polymerase came here and start making messenger RNA of that gene only, from where methyl group has been removed. बाहर से स्टिमुलस आया, वो रिसीव हुआ, रिसीव किसने किया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने। किसने किया? There is a stimulus, there is a change in the environment, and it is detected by transcription factors, and these transcription factors then they get activated, and then they move towards the nucleus, where they remove the methyl group from their corresponding specific genes and activate the expression of that gene. These genes then they make RNA, and this RNA then make protein. This protein then help the plants or animal to mitigate that stress. But if this protein, they become enzyme, and they start a chemical reaction in which oil-related compounds are produced. What will happen? There's more oil-related compound is produced, and these oil-related compounds, they surround around the cells and protect this cell from cold or heat stress. If there is a heat, then ghee-like compound is produced. Okay? If there is a heat stress, then different types of compound is produced. If there is a cold stress, but there is a mechanism that is highly controlled and programmed. Every protein knows when they will express, when they are activated, when there is a stimulus, then they will activate. It's a controlled, it's not a aneva. This is a controlled, and everything is programmed. Every protein knows every part, every metabolites, every chemical, they know when to express and when to not express. अब मैं यहाँ पूरा दिन तो नहीं ना बोल सकता, सिर्फ 1.5 घंटे बोल सकता हूँ ना आपकी क्लास में. So it means that I know my boundaries. I can just teach you only in that 1 hour or 1.5 hour. Similarly, the same thing is present in our body, that every protein, every DNA, every molecule, they know when to express. सही है. क्या है? दोबारा से स्टिमुलस आया जी, सीआर. ये उठ के ना सबको बताओ क्या समझ आई आपको. तो सबसे पहले स्टिमुलस ठीक बच्चों, पहले स्टिमुलस एक सेल को तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स उसको रिसीव करेंगे, जैसे कि सीबीएफ करता है कि डिफरेंट फैक्टर्स जो उसको रिसीव करेंगे और वो जीन्स के पास या डीएनए के पास जाके मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे. उससे फिर एमआरएनए बनेगी. उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन में प्रोटीन. एक्सीलेंट बच्चे. और वो ट्रांसलेशन होने के बाद एक प्रोटीन बनेगी. दिस प्रोटीन विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट स्ट्रेस, either by activating you can take this chair as well. Okay, by activating the expression of the gene, this gene will, what they will do,
they make some chemicals process or pathway, which pathway help the plant or animal cell to survive under that toxic condition. Similarly, our body is also, कहते हैं ना वो लड़कियों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है. एंड सिमिलरली यू ओके, अब हार्मोन्स भी बनते हैं. अब हार्मोन अगर ठीक है, हार्मोन बन गया, बनने की एक दो चीजें होती है. देयर आर टू थिंग्स. वन इज हार्मोन बायोसिंथेसिस एंड देन हार्मोन सिग्नलिंग. ये जो अभी मैंने बताया है, दिस इज हार्मोन सिग्नलिंग. दिस इज हार्मोन. It means who make the hormone, from where it synthesized, when it is synthesized. There is another mechanism. Okay, इसके बारे में it means वो भी एक खास स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर सेम स्पेसिफिक हार्मोन बनता है, उनके भी कोई प्रोटीन्स हो. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज and oxygen. This is chemical reaction. Similarly, N2 plus H2, 2NH3. Okay, this is a chemical reaction in which two reactant and this is product, they combine together, they make. Similar chemical reaction is also taking place in our body. It means if you want to know what's happening inside our body, you must have a very good understanding of the chemistry. You must have a very good understanding of chemical reactions. What is going on inside the body? Okay, who ये अकेले दोनों को हम एक जगह रख दें तो इसके अंदर ये बन जाएगा. दूध पत्ती चाय हम रख दें, चाय बन जाएगी. उसको मिक्स कर दे तभी नहीं चाय बनेगी. कब बनेगी? व्हेन वी हीट. हीट क्या है? हीट वो कैटलिस्ट है. क्या है हीट? क्या है? इज अ कैटलिस्ट. हीट इज अ कैटलिस्ट. सिमिलरली, when this heat shock protein is produced or some proteins is produced after RNA and protein, then they are converted into enzymes, and these enzymes are act as a catalyst of the chemical reactions, and then they form unsaturated fatty acids, and these unsaturated fatty acids then accumulate around the cell. It means that we should know हमारी body made up of lipids, fats, carbohydrates, water, and many other molecules. From where these molecules came? Who synthesized that? Ribosomes is actually they assemble the protein. Ribosome क्या करता है? वो प्रोटीन को असेंबल करता है. असेंबल मीन, फर्ज किया हमारे पास ये चीज हो, ये डंडे हो, ये अलग अलग हो, इसको कंबाइन करना, इसको कहते हैं असेंबल करना. गाड़ी के पार्ट्स हम कोई पार्ट्स गाड़ी का कहीं बनता है, सम पार्ट्स दे मेक समवेयर एल्स, बट इन शेखुपुरा देयर इज अ होंडा